आज का सेशन बेसिकली हम हमारा प्रोसेस क्या है कोई भी स्टॉक पिकिंग के लिए। हम स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, हाउ डू वी पिक स्टॉक्स, एंड कहाँ आप मोमेंटम ढूंढ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो तुम्हें मोमेंटम बहुत क्विक चाहिए। तो कहाँ मोमेंटम मिल सकता है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए जनरली मोमेंटम तब आता है जब एक कोई ट्रेंड, जब कोई स्टॉक एक ट्रेंड में हो और वो छोटे टाइम फ्रेम में या वही टाइम फ्रेम पे एक पॉज ले चुका हो, थोड़ा ब्रीदर मिला हो उसको, उसमें ज्यादा बेरिश साइंस ना हो। सपोज अब ट्रेंड में है, उसमें बिना कोई बेरिश साइंस के वो थोड़ा ब्रीदर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, धीरे धीरे एक ही साइड में था, या तो वहां पे कहीं पे आपको छोटे टाइम फ्रेम के थ्रू आपको मोमेंटम के लिए लेवल्स मिल जाएंगे और वो मोमेंटम वहां से आता है। So we'll look at it how it does. So first we'll start with how to build a watch list, कि मतलब हम बेसिकली हमारे पास 200 स्टॉक्स जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है उसका वॉच लिस्ट है। उसमें से हम स्टॉक पिक करते हैं, उसमें अलर्ट्स डालते हैं। तो if you want to build it as a career, earn good profit from it, you have to take out time to read charts every day. So that is what we do. We read chart, मतलब we go through all our charts every day. रोज चार्ट्स देखो, आपकी प्राइस एक्शन की स्टडी ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी। So that's what we have been doing for 4 years. So that is why it is so easy for us to do it now. But with time, even you will get better reading chart. Like एक ही स्टॉक का आप चार्ट रोज पढ़ने लग जाओगे, रोज देखने लग जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे मूव करता है। तो आप पैनिक भी नहीं करोगे जब आप ट्रेड कर रहे हो। द मेन इशू विद मोस्ट ट्रेडर्स इज पैनिक ड्यूरिंग द मार्केट। उसके आप कुछ प्लान कुछ और किया हुआ है, एंट्री कहीं और ले रहे हो, स्टॉप लॉस कहीं और लगा रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो। मेन इशू जनरली यही होता है, एनालिसिस में ज्यादातर डिफरेंस नहीं होता लोगों के। सो वील डिस्कस इट। फर्स्ट वील सी हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट। तो हमारा बेसिकली वॉच लिस्ट होता है, जैसे जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है या एफएनओ स्टॉक्स है, जैसे इधर है जिसमें 186 स्टॉक्स है, इसमें सारे एफएनओ के स्टॉक्स आ गए, क्योंकि मैं एफएनओ में ट्रेड करता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, मेरे पास स्मॉल कैप का लिस्ट है। तो ये पूरे सबके सब स्मॉल कैप हो गए। ठीक है। तो ये बनाते कैसे, एक क्लिक में बन जाता है। और एक क्लिक नहीं, थोड़ी सी एफर्ट है, बट ऐसे 250 स्टॉक्स के नाम नहीं डालने पड़ते ट्रेडिंग व्यू पे। तो वन थिंग यू कैन डू इज, ट्रेडिंग व्यू जनरल फ्री है, बट अलर्ट्स लगाने हैं तो अलर्ट्स के लिए थोड़े पैसे लग जाते हैं, और नहीं तो इन जनरल फ्री है। आप कितने भी वॉच लिस्ट बना सकते हो, उसमें कितने भी स्टॉक्स डाल सकते हो। सो हम क्रोम पे जाते हैं, हम सर्च करते हैं, एक सेकंड, हम सर्च करते हैं। मैंने बेसिकली सर्च किया था एनएससी निफ्टी 50 स्टॉक्स इन एनएससी। ठीक है, मुझे ये पहले आ जाएगा लिस्ट। तो यहाँ पे जो डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स है वो मैं डाउनलोड कर लूंगा। इसको एक्सेल पे जाता हूँ। तो ये मेरे पास पूरे सिंबल के नाम है, सिंबल वाला जो लाइन है मैं उसको कॉपी कर लूंगा। मैं शीट बनाता हूँ यहाँ पे। कमांड पेस्ट किया इधर। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू ये जो नाम है उसमें A1 एंड डालना है, और कोलिन्स में कॉमा डालना है, बस इतना कम करना है। तो ऐसे अडानी ENT कॉमा आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा या डबल क्लिक कर दूंगा, सब पे आ गया। तो मैं इसमें कॉपी करूंगा इसको, ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, मैं नया वो क्रिएट न्यू लिस्ट, ट्रायल निफ्टी 50। मैं यहाँ पे प्लस साइन पे कमांड V, और ये सारे के सारे ऐड हो गए। तो हो गए, एक एक बजाज ऑटो का चेंज होगा, क्योंकि बजाज ऑटो का क्या हो गया इसको। तो थोड़े एरर्स मिल सकते हैं आपको, उसमें कुछ नहीं, आप बजाज ऑटो मैनुअली पे ऐड कर सकते हो। ये अंडरस्कोर है इसलिए इसको हटा के मैं इधर से बजाज ऑटो हटा दूंगा। सो बेसिक प्रिपरेशन तो हो गया कि मेरे को निफ्टी, अगर मेरे को निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, मेरे पास निफ्टी 50 स्टॉक्स है, तो उनमें से मेरे को कौन से ट्रेड्स लेने हैं, कहाँ से लेना है, तो मेरे को मालूम पड़ गया निफ्टी 50 स्टॉक्स में कौन सा सबसे ऊपर था, आज कौन सा सबसे नीचे था। बहुत ही ईजी हो जाता है टू एनालाइज द मार्केट। ठीक से
Sure. Just Shash, we'll take questions once I'm done explaining. कोई questions हो तो आप chat box में डाल दो. If I can, अगर मैं quickly वही, will we get if we get मतलब if we can solve that question right away, we'll do that. Or else at the end of the session, we'll take all your questions, all regarding trading. And Praveen, yes, you will get a recording. So in a day or two, it will take some time, but yeah, you will get a recording. But I would ask you to stay in the webinar till the end, watch it, ask your questions, make it an interactive session so we can learn from each other. So, yeah. So once we have created the watch list, now let's look at few stocks. So basically, our whole thing is uh, the stock should be bullish. If I'm planning to take long trades, the stock should be bullish on the weekly or daily time frame. And bullish as in basic Dow theory, higher highs forming higher highs, higher lows. Basically, it is in an uptrend. If you don't know what's an uptrend, downtrend, sideways, just Google it, Dow theory, or what are the three phases of market, you'll get it. So basically, when it's making higher high, let's go to Titan. So when it is making a higher high, higher low, higher high, it is in an uptrend. Now Titan it is in a strong uptrend because it's on weekly charts. Higher the time frame, the stronger the trend it trend it is. So now on daily time frame, now if I look at Titan, if I want to build a trade, I would go for long bullish trades on Titan. Even if I'm trading intraday. So on daily, it is forming. Again, if you see, yesterday it would have been on my watch list because see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is 7 days in the same range. So if you go to hourly, you'll find a range. See, it's taking resistance from the same point again and again. Once it could be according to your setup. If you're waiting for candle close, if you're not waiting for candle close, it is completely up to you. Uh, there's some other setup, other indicators that you use. You can use other things to make it more personal, make it more. There should be confluence of multiple things. That is how you short down your trades according to you. You're more confident. You back test it a little bit, and that's how you go about. But the basic thing is, it is bullish on weekly, all time highs. It is bullish on daily, taking a pause, gave a breakout, but it was on a pause for a long time. And on hourly, if you see, it took resistance once, twice, thrice, four, five, 5 times. Once it's out of this range, you will see momentum coming through. It might take some time, but on maximum occasions, it will come because it was facing issue. It was finding it difficult to cross 2920, and it was making the resistance weaker. It's basic things. Multiple times hitting the same resistance, it gets weaker, and that is where the maximum positions change. Because if you're short on Titan, your most stop losses would be around here, a little above this 2920, or at 290 maximum stop loss are getting hit for short traders. That's where the momentum kicks in. So Titan, even now, if it form even now, it is a good trade, but a long moment, like on 15 minutes, it's a bit overextended for me. For me, the stop loss wouldn't, the risk reward would match. So if it comes down like this slowly and steadily, if it is coming down and again giving a trend line breakout, that's where I'll enter the trade. Suppose it's I'll show. If it is coming down like this, slowly and steadily taking resistance and forms a double bottom or consolidation breakout around this trend line, I'll take an entry out here for a bullish trade, and that's where I'll get momentum. So this is how we go about it. I look at all the FNO stocks every day, and now if you look at, let's create a watch list together. HDFC Life, ICICI Pruli, everything was based on some news. That is what I'm looking at, because SBI Life, HDI Life, all the life insurance companies were up, showed great momentum. And if you look at it, there was a lot of resistance. It is still on resistance on weekly. So I'm not very sure, not very bullish, and there's no uptrend, not very bullish. The momentum can come from anywhere. That's true. But there's one process that we follow. This is a trend line breakout. There is some breakout or the other happening. So on hourly, if you see, if you could have taken this trade, I would still not be comfortable to take this trade because this is around resistance.
it gave a long hourly candle. So this trade, that is why we missed out this trade completely. Because the risk reward won't match it, the 5% moves don't come every day. So we have to trade within the +2 -2 range. If it comes to +2 and goes to +4, well and good if I'm able to hold it. But that the general trend is around 2% to -2% for stocks. So let's look at Manappuram. Manappuram, it is forming a base consolidation, but not really looking at to enter it. Again, very bearish, very bearish. So, and a small fall, like a long fall, it could be good for investment, building your positions out here if it is fundamentally good stock. But intraday, I would completely avoid it because I won't be confident on which direction it might go. And such big candles on any day, I wouldn't be comfortable. So let's move on to Ashok Leyland. Ashok Leyland was also a good stock for Friday. If you look at it, it is in a bullish uptrend. Uh, Making higher highs. Then again, from not a clear trend as such, but on monthly it is on a bullish trend and giving about to give a all-time high breakout. So yeah, on daily it was consolidating at the same level, falling from the same level. Let me show you, falling from the same level again and again, again and again around this area, and the first momentum came from a smaller time frame consolidation. See, look at here, look over here. It gave a breakout, continued the momentum for a few days, and now after giving this momentum, it gave strong candles, strong candles. Now again, it is at a resistance. Now, if it forms and now if it